America is their biggest enemy. Right. Right. ठीक है? They condition their children right from when they're in play schools to go to war. आकाश भाई, पिछले 3 दिनों से ना मैं रात रात में 2-3 तक आई बिन वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, आई बिन रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट नॉर्थ कोरिया. अब मेरे को उसमें कोई जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं दिखा, मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे. मतलब हाउ डिफरेंट a country can be, and matlab living in India or living in a place where we are privileged enough to be able to voice our opinions. Right. That's what we are doing through this YouTube channel medium that we have. Yeah. Just imagining, just having a thought of a country like North Korea which exists in real life, it is nothing short of the most haunting nightmare that anyone can ever have. Right. इतनी ज्यादा अजीब और अलग चीजें हैं ना नॉर्थ कोरिया के बारे में, that I want to discuss today. And honestly, you will be, and everyone watching this video will be fascinated. They will be left speechless. They will not know what to think after they find out all this. Because मतलब तेरे को कोविड का टाइम याद है? इंडिया में सेकेंड वेव, यू रिमेम्बर व्हेन एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम वाज पोस्टिंग स्टोरीज कि अच्छा गैस सिलेंडर्स यहाँ पे हैं, ये है, वो है, बेड्स यहाँ है, वहाँ नहीं है. That was not even 1% of what the life in North Korea is like. मतलब times when we felt completely hopeless कि भाई क्या करें हम, you know, वो एक चीज थी. But North Korea की day to day life, even without COVID, without a pandemic, without anything like that, वो भी ऐसी लाइफ है that it will just make you think. It will make you realize how privileged you actually are to be living in a civilized society. Right. तो आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा मेरा मन है काफी. Now, if we are actually trying to discuss a very dark theme, so मेरे को लगता है मुझे लाइटिंग चेंज करने की जरूरत है. बिल्कुल, definitely let's do that. So, to begin the podcast, Akash bhai, let me tell you where my obsession towards North Korea actually started. The thing is कि there's this girl, her name is Yeonmi Park, ठीक है? She is an ex-resident or an ex-citizen of North Korea. Now, वो North Korea में she used to live, but now she's called a defector. Why a defector? Because जैसे होता था ना कि हमारे स्कूल में कि ये डिफेक्टर है, क्यों ये बेल्ट नहीं पहन के आया है, सॉक्स नहीं पहन के आया है, शूज नहीं पहन के आया है. सो बेसिकली शी इज अ डिफेक्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया. व्हाई? बिकॉज शी एस्केप्ड. क्योंकि देयर आर नो सिटीजंस ऑफ नॉर्थ कोरिया हु आर अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द कंट्री, नॉट अलाउड टू ट्रैवल. सो वो तो चलो एक बड़ी मेन स्ट्रीम सी बात होगी that we all know. But let me begin this with asking you so that I clarify some things that you hold about North Korea, because अगर मैं सब बताने बैठूंगा तो 3-4 दिन से पूरी रात I've been studying this. Right. So one podcast is definitely not enough to talk about this. So you tell me, I'm asking you, what are the two main things that come inside of your head when I pop the question, or when I ask you North Korea, when I say the word North Korea, what are the two biggest things that come into your head? Tell me. Firstly, oppression. Oppression over subjects. Okay. And dictatorship, which is political in nature, and a mysterious element attached to it. Yes, very right. Very Because well the said. freedom of press is not there. Very well said. But then, tell me, and this will be a technical question, a confusing question for that matter. How do you know that you're oppressed? Essentially, when you're comparing yourself to other countries, other democratic countries, No, you feel you're oppressed. Yeah, you can say that. Yeah. But the thing with the North Korean population is that they don't know what oppression means essentially. Why? Yes. Because, so this brings me to one part of the conversation that North Koreans, they don't know about any other countries around them. Right. Alright? They just know about America. Why? Because America, in their own words, in their own fictional stories that they have created for their own public, America is their biggest enemy. Right. Right. ठीक है? They condition their children right from when they're in play schools to go to wars. Right. How? They make them wear uniforms of your army men, your soldiers and stuff like that. They make them these rides and these toys and stuff like that, which sort of very much look like guns and your bombs and fighter jets and stuff like that. Their swings look like fighter jets.
there are so many things like the conditioning starts happening from the age of 2 3. And do you know that once a kid turns 5 in North Korea, you don't have any right over the kid. You have to submit the kid to the state. So they can grow up, though they can grow the kid in whatever way they feel like. They can make the kid do whatever the dictator feels like, and that's how it is. You don't have any right over your own children, over your own kid that you gave birth to after he or she turns 5. I had heard about this that the army sentiment element is way too big in North Korea. I'd heard only It's about like this. okay, so it is like this. It is bigger than Bollywood is in India. Yeah. To be honest, and not just Bollywood, I would dare to say that that your army sentiment and the patriotism which has been created, which has been conditioned to put inside the heads of the citizens, it is bigger than religions are in India. And and there is no one against this. There is no one to and fro in this. Everyone is just at one side, which is that they have to support the army. They have to look up to the army. Like the army is the best. Our biggest competitor or our biggest enemy is America. South Korea, we don't we don't have any relation with South Korea at all whatsoever, and they don't. And neither of the Koreas call them the North or the South, because according to them the other part is it's like POK for us. It's like Kashmir is Kashmir. We don't say POK is different and Kashmir is different. So for them it's like this, that the whole country is a part of our country only. So there's always that sentiment in both the Koreas, but I'll not go towards South today because that is entirely different and everything. Because it is in many terms a open country and whatever, and they have a lot of free activities, they have journalism, whatever, blah blah, everything exists, and they have a lot of support from America. So I won't go towards that. I'll just talk about North Korea. There's a basic sense of empathy, of compassion that a person feels towards other human beings. Right? North Korea में ऐसा कुछ भी नहीं है. This girl, Yeonmi Park, the one that I was talking about earlier, she tells us how when they're walking, when she was a kid and she used to walk to school and stuff like that. School जाते हुए, there were times because of the famine and stuff like that. There were times कि there were dead bodies in front of them in bundles. Dead bodies सड़क के किनारे पे पड़ी हुई हैं. Rats are eating their eyes. And then in turn, the kids, because there is no food, essentially, there's no food at all whatsoever. वो तो अभी भी पीछे चल रहा है. हाँ, so what they do is that they catch those rats and then they eat those rats, and because the rats are infected, they die after eating those rats, and then the rats come and they start eating the kids. This is a reality of North Korea today. Like there's such a huge amount of food shortage. जैसे how rats can feed up to everything. They eat anything that they find. अब वहाँ पे भूखमरी है, पानी नहीं है पीने का, खाने के लिए खाना नहीं है. But the thing is कि North Koreans को ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि this is not supposed to happen. Right. For them, there is no empathy, there is no compassion. If someone's dying, they're like, okay. They are conditioned in such a manner that death is nothing to them, and death does not mean. जैसे if I go to a soldier today and I ask them about death, तो वो तो बोलेंगे यार it will be the biggest honor of my life dying for my country. वो सीन नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है. It is like this कि वहाँ पे if you're dying because of hunger, उनको लगेगा natural death है. If there aren't enough crematory grounds or if there aren't enough burial grounds or whatever, it's okay. That's how it is. That is essentially what life is like. वहाँ पे it is an actual reality कि जो चूहे होते हैं, they feed upon these dead bodies जो कि पड़ी नहीं है, ठीक है? And when the kids find these mice and stuff, they start chasing them, and the mothers tell them to stop because अगर ये चूहे उन्होंने खा लिए तो वो मर जाएंगे. So essentially उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है. Why are they chasing rats and stuff? Because वहाँ पे खाना है ही नहीं. ठीक है. अब बात तो ये आती है कि चलो ठीक है, अगर ये चीज सच है तो आज तक जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर आज तक कभी कैमरा नहीं गया. कैमरा गया. हाँ, मैंने बहुत, अब जो मैं यूट्यूब की बता रहा था कि आई वाज वाचिंग सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टफ, मैंने एक रात बैठ के 3 डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, 2 hours ईच. 6 घंटे मैंने एक रात निकाले थे. क्या टूरिज्म इन नॉर्थ कोरिया. यू कैन गो एंड वॉच दैट इफ यू फील लाइक. द थिंग इज कि टूरिज्म बिना नॉर्थ कोरिया में ऐसे क्रेजी लेवल पे है कि इतना ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वो लोग दिखाते हैं. इन व्हाट सेंस
ऐसा लगता है जैसे दे आर एक्टर्स, जैसे ऐसा लगता है that you're a part of a movie set. जैसे you're told to walk around, you're told to do everything. I heard the same thing about censorship in North Korea. कि essentially there is censorship on the TV programs. People can watch. Ordinary people. There's only 3 TV channels. हाँ, that All is of essentially North what I Korea. was coming to. कि there is complete protection of the government sentiment when it comes to the press, when it comes to whatever sort of entertainment people follow. No, see, the thing is that you can say that there is complete control or complete protection. But essentially for North Koreans, they don't know what media is. They don't know what, how do I explain this? See, the thing is that they don't have any idea about any of what you're talking about. उनके लिए TV means 3 channels. उनके लिए movies means movies that are being produced by the government to sort of praise the dictator and their lineage, family lineage or whatever, and that's it. And there is also a sentiment that South Korean entertainment is big. The K-pop entertainment, everything is big. So essentially, any North Korean living in their country, if they ever have access to something which is related to South Korea, that person is considered an enemy. No, I'll tell you something. They don't have access to any of this. If they end up smuggling stuff like this, they are killed. And not just them. Okay, I'll tell you. See, North Korea में there are 3 types of punishments. ठीक है? एक punishment होती है जिसमें आपको मार देते हैं. ठीक है? दूसरी punishment होती है मारते भी क्या करते हैं कि देखो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं. So they need someone to clean up the radioactive waste and stuff like that. क्या करेंगे? अच्छा, you did something wrong, तेरे को उठा के जेल में फेंक देंगे. जेल क्या है कि तेरे को वहां पे जाना है, ये सब साफ करना है. Within 2 weeks, 3 weeks or a month you'll die. क्योंकि वो शर्नोबिल से 10 गुना ऊंची जगह पे तेरे को फेंक रहे हैं. You're completely unprotected. किसी को पता ही नहीं है कि क्या साफ सफाई, वो बस कर रहे हैं साफ सफाई. What is the most surprising thing of all? That even after the Korean suffering out of famine, hunger and everything, the dictator is still developing mass destruction of weapons. Mass destruction. So no, see, that is a different thing entirely. But this has been their life of the Koreans from the last 50-60 years. Right. Ever since North Korea was created, उनको कभी भी ऐसा अच्छे से खाना वाना नहीं मिला. उनके साथ कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया कि now we are eating, we are happy. जैसे इकोनॉमी के फेजेस होते हैं, जैसे अभी अमेरिकन डिप्रेशन है, ठीक है, अभी वेस्टर्न डिप्रेशन है, इंडिया भी राइज कर रहा है, हो सकता है कहीं को उल्टा हो जाए, हो सकता है फिर से उल्टा हो जाए. बट इसमें क्या होगा, जैसे देयर आर फेजेस. नॉर्थ कोरिया कभी उठा ही नहीं. समझ रहे हैं? नॉर्थ कोरिया में शॉर्टेज ऑफ फूड इज अ रियलिटी. इट्स नॉट अभी ऐसा चल रहा है काइंड ऑफ सिचुएशन कि नाउ आई एम फीलिंग हंग्री. व्हाई? बिकॉज़ आई डोंट हैव एक्सेस टू फूड एनीमोर. नहीं, जब से तू पैदा हुआ है तब से खाना है ही इतना. सो यू डोंट नो व्हाट फिलिंग योर स्टमक मींस. North Koreans on average are 3-4 inches smaller than everyone else because of lack of nutrition. Malnourishment and lack of nutrition throughout their life. Malnourishment तो हो गया ना जो एकदम बच्चों के लिए होता है. Throughout their life they don't get any food. मतलब they have to either eat seaweed जो कि क्योंकि it's a coastal वो ढूंढ के खा लो या चूहे खा लो. That's it. जो बहुत हल्की फुल्की vegetation है वहाँ पे. How can that feed a population of 30 million? North Korea is a populated country, contains 30 million people. When you find out that there is no food for these guys, this is what the reality is. अच्छा, and coming to the जो 3 टाइप की पनिशमेंट्स होती हैं, एक तो ये हो गई. दूसरी पनिशमेंट हो गई कि अगर मान लो आपने कोई क्राइम किया है तो आपकी लाइफ, आपकी 3 जनरेशन को दे विल पुट इन जेल. राइट. सो ये जो लड़की है यूट्यूबर, शी वाज मेंशनिंग दिस एंड शी टोल्ड कि एक ऐसा सिनेरियो उसने विटनेस किया था व्हेन शी वाज इन नॉर्थ कोरिया कि एक लड़की थी, वो वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, शी एस्केप्ड. ठीक है, नॉर्थ कोरिया छोड़ के भाग गई. शी वेंट टू साउथ कोरिया, वो निकल गई, ऐसे भाग गई, जो भी व्हाटएवर. ठीक है. सो व्हाट दीस गाइस डिड टू सेंड आउट अ मैसेज, 8 जनरेशन ऊपर नीचे 30,000 लोग मार दिए. Why? Because one person left the country. ये जो आप YouTube पे देखते हो ना कि अच्छा सिर्फ इतने से टाइप के हेयर स्टाइल्स अलाउड हैं, आप you cannot have a camera. This is very base level stuff. The actual North Korea is much different. Now coming to the documentaries that I watched. भाई documentaries जो मैंने देखी थी ना, उसमें there were many times जहाँ पे अच्छा वहाँ पे क्या है कि there is only one hotel पूरे नॉर्थ कोरिया में, there is only one hotel for tourists. सिर्फ एक ही होटल में आप रुक सकते हो, that's it. अच्छा, वहां उस होटल से आप बाहर नहीं निकल सकते until unless you have your guide with you. ठीक है. वहां पे मैंने एक सीन देखा था, there are villages, literal villages, right?
जो कि बस एक ऐसा सेटअप सा बना रखा है कि चलो ठीक है, दिस इज व्हाट लाइफ इज लाइक। और गेट्स हैं पीछे, गेट्स पे देयर आर गार्ड्स एंड योर आर्मी मैन स्टैंडिंग। अगर आप उसके पीछे देख सको, जो भी उस डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा दिखाया, तो लोग आधे नंगे घूम रहे हैं ठंड में, बाहर बर्फ है। Army men are standing there that you cannot cross this area. Why? Because we have to maintain an aesthetic that we need to show to the world. That is what the true reality of North Korea is. वो आप अगर आप वहाँ पे टूरिस्ट बन के जाओगे ना, आपको वो दिखाएंगे कि अच्छा ये ट्रेन ऐसे चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की जो मेट्रो है ना, इट इज द डीपेस्ट टनल एवर, जो 100 फीट नीचे जाती है, सो दैट इज लाइक वन ऑफ द डीपेस्ट व्हाटएवर। तो अब नॉर्थ कोरिया में क्या है कि अगर आप टूरिस्ट बन के जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे वो राइड भी कराएंगे। बट ये जो लड़की थी यूट्यूब वाली, शी टोल्ड कि सिर्फ 2 स्टेशंस हैं, एवरीथिंग एल्स इज क्रिएटेड फॉर द टूरिस्ट। सो एसेंशियली द पीपल दैट यू सी ओवर देयर, 500 600 800 लोग आपको हर जगह दिखेंगे। ऑल ऑफ देम आर एक्टर्स, They're paid. they are paid. I don't know if they are paid or not, but they are actors who have been appointed by the government to portray a perfect image of North Korea to the world. जो आपको ट्रेन में बिठा के घुमाया जाएगा, that is not a true train, मतलब वो बस ऐसी, that is just for the show business stuff, ठीक है। उसके बाद आपको amusement parks में भी लेके जाया जाएगा, ठीक है। No amusement parks exist. एक वो बना के उन्होंने छोड़ रखा है, which is maintained. Why? आपको सिर्फ उसी में लेके जाएंगे, आपको सिर्फ वही राइड्स कराएंगे, और आपके आसपास लोग भरे हुए होंगे। And all of fake image, yeah, just to maintain all of that is set up. Every single thing is set up. मतलब तू सोच, you're going to a place, how is it any less than that of a movie setup है? हाँ, exactly. It's just a very grand movie setup. Yeah, you can say. It's like your whole country you're portraying it as a movie setup. कि चलो भाई, जहाँ पे भी आप जा रहे हो ना, you will just see perfect life, and you'll be like, हाँ ठीक है, Kim Jong Un is not a bad guy. You know, that's what you will feel like. You know, that's how they portray it. And they are very good at doing it. कि आप कहीं पे भी जाओ, you will see happy people all around you. You are not allowed to photograph anything. अच्छा, when you are entering North Korea, privacy धक्का, पूरा बैग तेरा, every single thing will be checked. Yes. ठीक है? Everywhere you go, you cannot click a picture. अच्छा, आपका कभी भी कहीं पे भी फोन चेक हो सकता है, कुछ भी आपकी चेकिंग वेकिंग हो, कहीं से भी कुछ भी करा सकते हैं। They don't care. They don't care who you are. They don't care where you're coming from. आपका फोन उठा लेंगे, आपका बैग उठा लेंगे, आपके फोन से पहले इमेजेस डिलीट करवा देंगे, जो मर्जी। There was an American tourist. अब यहाँ पे ना क्या होता है, प्रोपेगेंडा पोस्टर्स बनते हैं, ठीक है, because they don't have big screens and stuff, so प्रोपेगेंडा पोस्टर्स बनते हैं, ठीक है। So what they do in that is कि मान लीजिए पोस्टर है, अब उस पोस्टर में जैसे यूजुअली व्हाट इज पोर्ट्रेट इज जैसे यूएसएसआर विलेन एंड स्टफ लाइक दैट, एंड यू हैव टू वर्शिप किम जोंग उन एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत हार्ड कुछ नहीं होता, इट्स ऑलवेज सॉफ्ट इन्फ्लुएंस एंड स्टफ। अब YouTube पे देयर आर सम पोस्टर्स दैट यू कैन फाइंड, ठीक है। So there was one US guy, some tourist from US, I don't remember his name, I put out like a photo and everything here in this video. तो उसमें वो क्या करता है भाई, वो बंदा गया, वो एक पोस्टर लेके आ रहा था, ठीक है, वो पकड़ा गया, उसको डाल दिया जेल में, वो कोर्ट में गया, 7 साल उसे जेल हुई, 7-8 साल, एक पोस्टर कंट्री के बाहर लेके जाने का ट्राई किया, 7 से 8 साल उसे जेल हुई। जेल के बाद क्या हुआ भाई के साथ, जेल के बाद चलो ठीक है, अब उसको कोर्ट में बुलाया, दिखाया हमने कि भैया हम तो फुल जुडिशरी व्हाटएवर, हाँ ठीक है, कि हमारा अच्छा जुडिशरी सिस्टम है, ये है वो है, सब दिखाना, नौटंकी करी पूरी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, और वो वीडियो भी दिखाई। वो बंदा कोर्ट में आके रो रहा था, दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, प्लीज लेट मी गो, आई एम ओनली अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई विल शो द होल वीडियो, आई विल पुट द होल वीडियो हियर। तो भाई अब द सैड पार्ट इज कि अच्छा, वी नो हाउ यू नो रॉन्ग ऑल ऑफ दिस इज, बट बुरी बात ये इन सब चीजों की कि यार इन लोगों को खुद को नहीं पता कि ये सब गलत है, ये सब ठीक है। जैसे मतलब यार ऐसा मेंटल असाइलम है ना नॉर्थ कोरिया, कि इस टाइम पे आई नो दैट इट इज अ वेरी हार्श थिंग टू से, बट अगर आप यूएसए डिसाइड करते कि चलो मैं लिबरेट करूंगा नॉर्थ कोरिया को, व्हाटएवर, इमेजिन, लेट्स इमेजिन कि ठीक है, they have nuclear powers already, but USA finds out a way to sort of, you know, let them the next Vietnam or Iraq or something like that. जो भी video, ठीक है, मतलब if USA decides कि चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे, तो प्रॉब्लम है कि वहां पे ना ओवर 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो इतनी ज्यादा ब्रेन वॉश है कि अगर आप जाके अटैक करते हो ना और आपने किम जोंग उन को मार दिया, तो वो खुश नहीं होंगे कि चलो नाउ वी आर फ्री, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि फ्रीडम क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि पेट भर के खा पाना क्या होता है। They are very naive in that sense. Yes, they are very naive in that sense. तो अब वो to give you a very small example of this, न्योमी पार्क जो है, ठीक है, अब आप इंडिया में रहते हो, many ये आपका जब भी पार्लियामेंट उठता है, पॉलिटिशियंस एक दूसरे के उतार रहे होते हैं, मीडिया चैनल्स
एक दूसरे पॉलिटिशियंस की उतार रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं उनके बारे में, मजाक और हम मीम्स बनाते हैं, इतने सारे सब होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है, हम इतना ओपनली पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं कभी कभार, मतलब यू हैव द राइट। अब न्योमी पार्क को ना एक और वो पॉडकास्ट में आई सॉ दैट पॉडकास्ट इस बार, उसमें वो बंदा बताता है कि चलो ठीक है, वी लिव इन यूएसए, तो यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट होता है ना, साल में एक बार उसका रोस्ट होता है, एंड ही हैज टू अटेंड इट। अब काफी सारे लोग होते हैं जो आगे उसका सिर्फ रोस्ट करते हैं, दैट्स अ customary practice हाँ, in it's a US customary. settings. Yes. So you know the first reaction of Yeonmi Park was on this, and you guys don't get assassinated for this. Exactly. You guys don't get assassinated. वो हंस रहा है कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, मैंने करी है ये चीज, and I'm fine. But see, that is the level. You cannot even, मतलब if this is the first thought that you're getting, मैंने सुना, मैंने कहा क्या fun चीज हो रही है यार, मजा आएगा, I have to watch this, कि what is it called, YouTube पे देखना। But the first thought that popped up in her head कि अच्छा you guys don't get killed for this, कि this is the, imagine the level of strictness that these guys have. Now some people might believe कि चलो ठीक है, that is good, but I don't see it in that sense. And the sad part is this only कि अगर यूएसए जाके उन्हें बचा भी देना, तो भाई अगर वो उन्होंने डिक्टेटर को मार दिया, उन्होंने अपना रूल लगा दिया, 90% of the people are brainwashed till the level कि वो खुद ही यूएसए के सोल्जर्स को मारना शुरू कर देंगे। समझ रहा है कि वो खुद ही मारपीट शुरू कर देंगे, तुम भागो यहाँ से। अब अच्छा, वहां का जो लैंड बॉर्डर है ना, द वन दैट कनेक्ट्स विद साउथ कोरिया, क्योंकि जो दूसरी साइड का बॉर्डर है दैट इज चाइना एंड देन रशिया। अब चाइना एंड रशिया, अगर आप भाग के चाइना एंड रशिया की तरफ चले जाते हो फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, तो वो वापस भेज देते हैं नॉर्थ कोरिया। हाँ, obviously. So you cannot escape from there, ठीक है? वो ईस्ट एशिया में हो गया ना। हाँ, you cannot escape from there। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, you can go to साउथ कोरिया, या फिर सी रूट से आप जा सकते हो जापान की तरफ, वो दैट इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। बट अगर आप साउथ कोरिया की तरफ चल भी गए, चलो ठीक है, वहां का जो बॉर्डर है ना, 1500 किलोमीटर स्ट्रेच, वो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गार्डेड बॉर्डर, पूरी दुनिया का, ताकि कोई भाग ना जाए, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ सीक्रेसी दैट द कंट्री होल्ड्स। अब व्हाई डू यू थिंक माइग्रेशन इज सच अ बिग इशू व्हेन इट इज नॉट इवन अलाउड? क्योंकि लोग इतने मर चुके हैं अंदर से वहां से दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू। अब तू सोचे कि चल ठीक है, तू पानी से तैर के चला जा, भाई वहां की जो बीचेस है ना, मोस्ट ऑफ द बीचेस वहां पे भी बार्ब्ड वायर्स लगे हैं, यू कैन नॉट एस्केप होगी। वहां पे जो नॉर्मल जनता है, वहां पे पेट्रोल की इतनी कमी है, कैन यू इमेजिन कि एक गाड़ी लकड़ी जला के चला रहे हो, लाइक स्टीम इंजन्स, जैसे वो दे यूज्ड टू थ्रू कोल्स, ये लकड़ी काट के दे पुट इट इन देयर, जो स्टीम बनती है, they use that to drive a car. You cannot even imagine this कि अच्छा ऐसा कुछ हो भी सकता है, but this is the reality of North Korea. I'll show you a video also. ये लकड़ियों से they are driving their cars. They don't have that much petrol also. So this is the reality. I mean, आज इतना ही बोलूँगा मैं, but it is like a completely unexplored area, a completely unexplored topic, and you know, I mean, my heart gets really heavy and really sad for the people of North Korea because they don't even know the kind of suffering that they're going through. Like they don't have any compassion for birth, death, anything like that whatsoever. So yeah, that's it for today, I guess. I hope you guys really enjoyed this video as well, guys. And if you did enjoy it, then please give it a like. Tell us your views about it in the comment box below. Subscribe to our channel. Signing off now, The Beardman Show.